नमस्ते, आपका स्वागत है प्रोफेसर आनंद चौधरी के द्वारा यूट्यूब चैनल एनालिटिका आयुर्वेदा पर। एज यू आर अवेयर, नाउअडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटीग्रेशन। तो जब भी मैं इस वीडियो को बनाने का बात सोचता हूँ, करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे बहुत आंतरिक इच्छा होती है, बड़ी बलवान इच्छा होती है कि बड़े ही संस्कारित और बड़े ही अच्छे शब्दों में मैं जिज्ञासा नामक संस्था की प्रशंसा करूं, सराहना करूं, उनकी सांगठनिक क्षमता की, उनके कर्मठता की, आयुर्वेद के प्रति उनके समर्पण की और आयुर्वेद विकास के लिए उनके द्वारा किए जा रहे निरंतर कार्यों की, और मुख्य रूप से आयुर्वेद के स्नातकों परास्नातकों के विकास के लिए जो कार्य जिज्ञासा कर रही है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूँ। तो अभी जिज्ञासा ने जो यंत्र 2023 का आयोजन किया निम्हांस बेंगलोर में, और इस बार का जो उनका थीम था कि मॉडल्स ऑफ इंटीग्रेशन इन हेल्थ केयर, और निम्हांस में एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उसका इन लोगों ने नाम भी रख रखा है संयोजित चिकित्सा विभाग। वह भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपनी स्थापना के साथ ही, उस पर भी एक अलग से हम बात करेंगे। तो अभी तो मैं उनका उद्घाटन समारोह 24 नवंबर को हुआ था और आज 29 नवंबर है, लेकिन अभी भी रह करके मुझे उसकी भव्यता और उसमें जो दिव्यता थी, दिव्यता का मेरा आशय है ये कि उसमें जो उद्घाटन समारोह में जो अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित नंबर 1 लोग जो थे, जिनको कि वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी ने, निम्हांस के डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी ने कहा कि दे आर द इन्फ्लुएंसर, रियली वेरी राइट टर्म, कि दे आर द इन्फ्लुएंसर्स टू अफेक्ट द मेकिंग ऑफ पॉलिसी। दैट्स द राइट, वेरी राइट अप्रोच। और उसमें जैसे कि अभी आपने बुधवार को सुना होगा, मैंने डॉक्टर एस सोमनाथ की चर्चा की थी। अब यह संयोग नहीं है कि उस मंच पर जितने भी लोग थे उन्होंने इस थीम के, दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ केयर के पक्ष में ही बात की, और बहुत ही स्पष्टता से विथ वेरी क्लियरिटी दे डिफाइन द लैकुनीज एग्जिस्टिंग हियर in the system, which are an obstacle for the purpose of the integration in true spirit in the content. अब 2 लोग और मंच पर थे, और दोनों लोग माननीय कुलपति, ऑनरेबल वाइस चांसलर, एक प्रोफेसर रमेश जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को लीड कर रहे हैं, और उनके अंडर में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, जो भी हेल्थ साइंसेस हैं विद द बायोमेडिसिन। और दूसरे वाइस चांसलर साहब थे केरल से, प्रोफेसर मोहन, वो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से थे, वो भी लीड कर रहे हैं इन सभी विधाओं को। तो दोनों लोगों ने इंटीग्रेशन के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। तो डॉक्टर रमेश जब पोडियम पर आए उद्घाटन समारोह में, तो उन्होंने एक अपना एग्जाम्पल पेश किया, अपना उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्लांटर फेसिया थी जो ठीक नहीं हो रही थी। मैंने अपने मित्र, उन्होंने नाम लिया रामकृष्णा जी का, डॉक्टर रामकृष्णा जी का, वैद्य रामकृष्णा जी का, जो कि स्वयं एक कुलपति हैं एस व्यासा विश्वविद्यालय के। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बात की और कहा कि भाई ये मुझे समस्या है। तो उन्होंने उनको देखा, कहा कि ठीक है, आइए आप हमारी क्लिनिक पर। और डॉक्टर रमेश साहब 10 दिन के लिए गए डॉक्टर रामकृष्णा के यहाँ, और जैसा कि अगर मैंने नाम सही सुने हैं तो उन्होंने उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा की, और उन्होंने यही बताया मंच पर कि अपने संबोधन में कि उन्होंने उनका मसाज कराया, ऑयल कराया, कुछ अवगाहन कराया, कुछ प्रक्रियाएं की, और वो 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने धन्यवाद दिया
आयुर्वेदीय चिकित्सक को और आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति को। व्यक्तिगत लाभ के पश्चात भी यहीं पर ये वो अंडरलाइन करने वाली बात है, द पॉइंट विच इज रियली मेकिंग अस मोर अलर्ट and inviting us to do work more systematically. Even after the individual benefit, personal benefit from a disease, which are not curable normally in the biomedicine, Dr. Ramesh appreciated Ayurveda and Ayurveda physician, but he demanded at the same moment, in the same breath, that here is the need of documentation. Okay, an individual has been benefited. Suppose he is a vice chancellor, honorable vice chancellor, but a common man who is coming for the treatment of his ailment or her ailment, they never ask for the documentation. They are getting relief, they are happy. They don't bother which system it was. They want relief. If relief is there, they are happy. Okay, but here, being a vice chancellor, being an upright academician, being a brilliant researcher, what Dr. Ramesh sir said, that is really significant, thought-provoking. Well, yes, I am benefited, but I cannot advocate it to the forums, platforms where policies are being made for the integration of the healthcare. Personally, I am benefited, but I shall be able to be an advocate for the integration in the healthcare system if I shall have some document on the lines of nowadays language of the research, then I can support the movement of the integration. He was very crystal clear in his mind that he needs documentation, evidence, and he appreciated that he is being exposed and he is knowing a lot of Ayurveda college are working very well, and Ayurvedic philosophy, Ayurveda doctrines, as he is chairing the meetings and he is meeting with the Ayurveda people. So, of course, he has been acquainted more about the Ayurveda system of the medicine and Ayurvedic physicians and Ayurvedic surgeons with whom he is working in the different committees of the university level. So, he has a very positive approach, and he suggested we all to work for the documentation in the language in which globe may be able to understand. Okay, thank you, sir. Then the next was the Dr. Mohan. He also talked about very positively, and he said principally we all are agreed for the integration. We must provide best of each pathy to the common man, and whatever the things are required and wherever required, the best should be there for the economic purposes too. He added this factor also, the economy. And he received a great clap of the audience when he said, why Ayurveda be only national system of medicine? Why Ayurveda is integrated in India only in the healthcare? Ayurveda should be universal healthcare of system. Ayurveda should be universally accepted, globally accepted. He used the term universal healthcare. It should not be Indian healthcare. Yeah, the right term he used. Ayurveda should not be called as a Indian healthcare system. Ayurveda should be called as a universal healthcare system, and all the audience, 1,000 BMS scholars and all the dignitaries clap during the inaugural session.
So Dr. Mohan just pointed out the potency of the Ayurveda for its transformation from Indian healthcare system, that is Ayurveda, to universal healthcare system. And that is possible, really possible, once the WHO notify ICD-11 Annexure 2, what our Honorable Secretary Vaidya Rajesh Kotecha ji is pursuing the case personally and very successfully. And he, even this is the coincidence, he interviewed by the Hindu and he declared that in February 2024, the Annexure 2 will be notified by the WHO and the Ayurvedic terminology will be there in the ICD-11. So all these academic achievements and the procedures for the proper systematic scientific propagation of Ayurveda is uncovered. We are moving on the path which leads to our global existence, and we are moving towards the global acceptance, provided we will work to create the document, to the evidence and many more things which is required by the science. There is a difference of opinion. People say first we have to define the word evidence in the healthcare system. What is the evidence in the healthcare system? What is the RCT, need of the RCT in the healthcare system? Someone, after this inaugural session, in the panel discussion, one speaker said, I'm not very much clearly remembering who that gentleman was. Otherwise, I'm very thankful to him and I must quote his name. But something just I'm missing it, the name of that gentleman. He said that the penicillin was launched into the biomedicine, whether any RCT was done for the penicillin. Insulin was launched, insulin. And he claimed, I don't know, I'm just quoting the fact there, I'm not substantiating it because I have to search, but he claimed that the insulin was launched directly clinically without any RCT after getting its finding, its role to reduce the blood sugar level. So in this same way, in the today's video, I just put the views of two Honorable Vice Chancellor, the Professor Ramesh of the Rajiv Gandhi University of Health Sciences and Professor Mohan sir from the Kerala University of Health Sciences. Both were very, very both were encouraging the integration, but they kept if but, and those if buts are important, matters. Even after the personal benefits, they need a document, an evidence for the advocacy of the integration of the healthcare. The next video, I am going to quote the views of chairperson of the NMC, National Medical Commission, Professor B.N. Gangadhar, and Chairman of the National Council of Indian System of the Medicine, NCISM, Vaidya Jayantidev Pujari. Just wait for the next, and this series of the integration will be continued. Namaste.